37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. तो जो बड़े ऐलान निर्मला सीतारमन ने टैक्स स्लैब को लेकर कर रही हैं, इनकम टैक्स की छूट सीमा 5 से बढ़ाकर 7 लाख की गई है। 7 लाख तक अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। 6 से 9 लाख पर आपको 10% टैक्स देना होगा। जो नए टैक्स स्लैब है 9 से 12 लाख पर आपको 15% टैक्स देना होगा। ये नए टैक्स रजीम का ऐलान है निर्मला सीतारमन की तरफ से, इस सरकार की तरफ से। 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर इनकम पर अब 30% टैक्स लगेगा। ये नया टैक्स रजीम है। 3 से 6 लाख पर 5% इनकम टैक्स। रेवेन्यू ऑफ अबाउट 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. उन उत्पादों के लिए जाना जाता है, उनके लिए ये यूनिटी मॉल्स स्थापित की जाएं। ये देश में राज्यों के उत्पादन को भी बल देगा और साथ ही साथ रोजगार भी मुहैया कराएगा। And to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation as necessary and feasible will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. एक जिला एक उत्पाद ODOP के लिए यूनिटी मॉल बनेंगे। ये बड़ा ऐलान निर्मला सीतारमन ने किया है इस बजट में। राज्यों के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल अलग अलग राज्यों की राजधानियों में बनेंगे। रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल ऑफ IFSCA, SEZ अथॉरिटीज, GSTN, RBI, SEBI and IRDAI, permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks, establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing, amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market.
Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain and enforce norms and standards for education in बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाना securities markets और उसी उद्देश्य के साथ degrees, diplomas आगे बढ़ने के and लिए certificates. कई अधिनियम में बदलाव की बात कर रही है। कई संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है बैंकिंग सेक्टर में। Through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र। एक एकीकृत आईटी पोर्टल का ऐलान कर रही हैं। कमेमोरेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव, एक एकीकृत आईटी पोर्टल जिसमें डिजिटल पेमेंट्स की जा सके, महिला सम्मान डिजिटल भुगतान को व्यापक बनाने के लिए ये डिजिटल पोर्टल का ऐलान किया है। will be made available for a 2-year period up to March 2025. और इस डिजिटल पोर्टल के लिए This will offer जो कोष सरकार up to 2 lakh in the name of ने दिया है उसे जारी रखा जाएगा आने वाले वित्तीय वर्ष में भी। of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens, the maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced. मार्च 2025 तक आजादी के अमृतकाल के चलते एक नई बचत योजना का ऐलान कर रही हैं। The maximum deposit limit for monthly income account scheme ये महिलाओं will be enhanced from 4.5 लड़कियों के नाम पर 9 lakh for single 2 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की जा रही है। and from महिला सम्मान बचत पत्र इसे नाम दिया गया है। account. 2 साल की अवधि यानी कि 2025 तक के लिए बजट की 2 साल की ये वन टाइम स्कीम है। 50 years interest free loan to states. The entire 50 years ये शायद महिलाओं के लिए इस बजट में अभी तक का सबसे बड़ा ऐलान है। महिला सम्मान बचत पत्र 2023-24 जो महिलाओं और लड़कियों के नाम पर the discretion वन टाइम स्कीम है। 2 साल के लिए ये स्कीम है और 2025 तक के लिए स्कीम है। आजादी के अमृत काल में इसका ऐलान निर्मला सीतारमण कर रही हैं। Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and 2 लाख तक के बजट पर ब्याज बढ़ाया है निर्मला सीतारमण ने bodies to make them credit worthy, महिला सम्मान बजट पत्र योजना के तहत। housing for police personnel above or 2 साल तक की ये वन टाइम स्कीम constructing unity malls जिसमें 2 लाख तक की बजट पर 7.5% ब्याज का ऐलान किया है निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए। capital expenditure of ये बड़ा ऐलान इस बजट में। Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees,
of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit राज्यों का जो fiscal deficit है 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, यानी 24.5 लाख करोड़ का, and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 41.9 लाख करोड़ का खर्चा. Net tax receipts are estimated at 23. राज्यों का एक्सपेंडिचर, the fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26 with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. मैंने पिछले बजट में ऐलान किया था कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसे कम करने के लिए हम प्रयासरत हैं, और मैं ये भी ऐलान करना चाहती हूँ कि उसे हमने 4.5% तक बनाए रखा है और 2025-26 तक हम उसे और कम करने की कोशिश के लिए को ध्यान में रखते हुए ही इस बजट का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि उस फिस्कल डेफिसिट को हमें कम करना है. Domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some. कस्टम ड्यूटीज में बदलाव का ऐलान करने वाली है निर्मला सीतारमण. वो कह रही हैं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में कस्टम ड्यूटीज में कुछ बदलाव है. Cascading of taxes on blended compressed natural gas. I propose to exempt excise duty on दरों की संख्या भी कम करने की बात कर रही हैं. biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased. निर्मला सीतारमण कस्टम्स ड्यूटी का ऐलान उस पर कम कर रही है. खिलौने, साइकिल और ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को पिछले कुछ समय से कोई राहत नहीं मिली थी. अब ये बड़ी राहत जो कि निर्मला सीतारमण जिसका ऐलान कर रही है, कस्टम ड्यूटी घटाई है, जिससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा. खिलौने, साइकिल इंडस्ट्री को भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान. सीमा शुल्क भी 13% करने का ऐलान किया है. For batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. 2.25%. टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जो स्पेयर पार्ट्स हैं उन पर कस्टम ड्यूटी घटाई है निर्मला सीतारमण ने, उसका ऐलान कर रही है. Of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat
coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to अब exempt. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एलईडी टेलीविजन भी अब सस्ते होंगे, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हैं जिन्हें इंपोर्ट करके देश में लाया जाता है उन पर कस्टम ड्यूटी निर्मला सीतारमण ने घटाई है। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि टेलीविजन सेट्स आने वाले वित्तीय वर्ष में उनका दाम घटेगा, यानी वो सस्ते होंगे। मोबाइल फोन्स और कैमरास भी सस्ते होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान कर रही हैं निर्मला सीतारमण। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी, क्योंकि हरित बजट की बात कर रही हैं, ग्रीन मोबिलिटी की बात कर रही हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट्स पे भी कस्टम ड्यूटी घटाई है। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आने वाले वित्तीय वर्ष में सस्ती होंगी। Marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. हरित मोबिलिटी as I said in part A, को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आने वाले वित्तीय वर्ष में सस्ती की जा रही है। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर दोनों को राहत इस बजट में निर्मला सीतारमण की तरफ से। जो बिजली से चलने वाले वाहन हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो सस्ते होंगे, लेकिन रसोई घर की जो चिमनी है उनके दाम बढ़ाए हैं, क्योंकि उन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। To increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on जो बाहर से आने वाली यानी विदेश से आने वाली इलेक्ट्रिक चिमनीज हैं, उनके दाम बढ़ेंगे, उन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। जो खिलौने हैं, साइकिल्स हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी सीधा सीधा मतलब गाड़ियां, उस क्षेत्र में राहत दी है निर्मला सीतारमण ने, कस्टम ड्यूटी कम की है। मोबाइल फोन्स और टेलीविजन सेट्स ये सस्ते होंगे आने वाले वित्तीय वर्ष में, क्योंकि इनके मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स पर छूट दी है निर्मला सीतारमण ने। प्रोड्यूसर्स हु मेनली इन द एमएसएमई सेक्टर्स। कंपाउंडेड रबर, the basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than चांदी के बने बर्तन भी महंगे होंगे, चांदी का बना सामान महंगा होगा, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है निर्मला सीतारमण ने। चांदी के बने गहने भी महंगे होंगे। 3 years ago, this is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, यानी विदेश से आने वाली चांदी से जो बनी हुई चीजें हैं वो महंगी होंगी। Taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 90 days. डायरेक्ट टैक्स स्लैब्स पर आ रही है अब निर्मला सीतारमण, यानी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव है कि नहीं? And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy.
Micro enterprises with turnover IT रिटर्न पोर्टल में एक दिन में 72 लाख लोगों ने रिटर्न भरा। वो कह रही है ये क्षमता और ज्यादा बढ़ाई जा रही है और टैक्स रिटर्न को और ज्यादा सरल बनाने की कोशिश पर काम कर रहे हैं। Limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are हम इसमें और सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं। Receipts are no more than 5%. Moreover, to support और IT रिटर्न्स को लेकर जो शिकायतें हैं उन पर भी हम जोरों से काम कर रहे हैं। For expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, 3 करोड़ के जिनके टर्नओवर है छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को कर में छूट का ऐलान कर रही है निर्मला सीतारमण। यानी जो छोटे और सूक्ष्म उद्योग हैं जिनका टर्नओवर 3 करोड़ का है उनको टैक्स रिबेट दे रही है, कर में छूट का ऐलान कर रही है निर्मला सीतारमण। ये बड़ा ऐलान है। ये कहा जा रहा था बार बार कि इस बजट में MSMEs को कुछ राहत दी जा सकती है, उसका ऐलान किया है निर्मला सीतारमण ने। जिन छोटे और सूक्ष्म उद्योगों का टर्नओवर 3 करोड़ है उन्हें टैक्स रिबेट दी। रिलीफ ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the 3rd largest ecosystem for startups globally and ranks 2nd in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. स्टार्टअप्स के लिए हमने अनेक उपाय किए हैं और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी भी है। At commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. यानी स्टार्टअप्स के लिए 31 मार्च 2023 से तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2024 की गई है। यानी कि आयकर रिटर्न भरने के लिए समय सीमा स्टार्टअप्स के लिए बढ़ाई गई है। In residential house under section 54 and section 54F to 10 crores. Another proposal with स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। ये भी बड़ा ऐलान जो निर्मला सीतारमण कर रही हैं। स्टार्टअप्स अर्थव्यवस्था को गति देने में एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और इसीलिए 31 मार्च 2023 के बजाय 31 मार्च 2024 तक वो अपना टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। ये बड़ा ऐलान स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स की छूट 1 साल के लिए। Set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns and villages and regulating and developing
an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming. Not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains. Reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses. निर्मला सीतारमण इस वक्त जो बड़े ऐलान कर रही हैं वो आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं। जो इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन यानी ऊर्जा से चलने वाले वाहन, उनको वो सस्ते होंगे आने वाले समय में। खिलौने और साइकिल सस्ती होंगी क्योंकि उन पर कस्टम ड्यूटी घटाई है सरकार ने। मोबाइल फोन्स और एलईडी स्क्रीन्स आने वाले समय में 1 साल में सस्ते होंगे क्योंकि उन पर भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स की कस्टम ड्यूटी घटाई है सरकार ने। स्टार्टअप्स के लिए 1 साल का टैक्स हॉलिडे यानी कि 1 साल तक की सीमा बढ़ाई है रिटर्न भरने के लिए। हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास, अब मध्यम वर्ग पर आई है, मिडिल क्लास के लिए ऐलान कर रही है निर्मला सीतारमण। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the बहुत बड़ा ऐलान निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब्स में किया है। 5 लाख तक की नो टैक्स स्लैब को उन्होंने बढ़ाकर 7 लाख किया है। ये बड़ा ऐलान इस वक्त निर्मला सीतारमण का। इनकम टैक्स स्लैब में निर्मला सीतारमण बड़ा ऐलान कर रही है। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. नई टैक्स रेजीम 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये इस बजट का सबसे बड़ा ऐलान मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए। टैक्स स्लैब जिसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ था, 2014 से यह बदलाव नहीं हुआ, उसमें बदलाव कर अब इनकम टैक्स का पहला स्लैब 7 लाख के बाद ही शुरू होगा। 7 लाख तक कोई कर नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं देना होगा। Starting from 2.5 lakh, I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. तो ये इस वक्त निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। 2014 के बाद नई टैक्स रेजीम का ऐलान निर्मला सीतारमण कर रही है। 7 लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं है। आयकर छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की गई है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा ऐलान। Only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh
rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. तो जो बड़े ऐलान निर्मला सीतारमन ने टैक्स स्लैब को लेकर कर रही हैं, इनकम टैक्स की छूट सीमा 5 से बढ़ाकर 7 लाख की गई है। 7 लाख तक अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। 6 से 9 लाख पर आपको 10% टैक्स देना होगा। जो नए टैक्स स्लैब है 9 से 12 लाख पर आपको 15% टैक्स देना होगा। ये नए टैक्स रजीम का ऐलान है निर्मला सीतारमन की तरफ से, इस सरकार की तरफ से। 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर इनकम पर अब 30% टैक्स लगेगा। ये नया टैक्स रजीम है। 3 से 6 लाख पर 5% इनकम टैक्स। रेवेन्यू ऑफ अबाउट 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House.